Alright, so these 6 main topics. So these are 6, you can say 6 units of physics, right? So now in these 6 units, they are further chapters. Like, so these 6 units have been divided into separate chapters as well. Like, for example, this covers 2 to 3 chapters, this covers 2 to 3 chapters, and so on, right? So these are the 6 main units. All right, so now till 2 last years, this space physics was not the part till 2022, right? So this came into existence in physics syllabus because when I gave physics, so this space physics was not included, right? So we'll be looking कि इसको किस तरह solve करना है and questions किस type के आते हैं, and also when we'll be doing past papers, so past papers में you'll also see that there is a variance in the questions because syllabus has been varying over the times. That is why जो questions का structure है वो थोड़ा सा different है, and also there is a little variance in the paper pattern as well, right? Okay. So as you can see, यहाँ पे लिखा हुआ है this is the syllabus 5054 for 2023 to 2025, which means कि 2022 तक ये syllabus नहीं होता था. What I mean by ये complete syllabus नहीं होता था is कि कुछ topics missing होते थे and paper pattern was also a little different, not completely different but a little different till 2022. Alright. So this is paper 1, multiple choice questions, paper 2, theory, and paper 4, alternate to practical. ये वाला हम skip कर दें, right? So MCQ simple, 1 hour का paper होता है, 40 marks होंगे, and the weightage is only 30%, right? And then moving to the theory paper. So 2022 तक ये होता था 75 marks का, and अब ये होता है 80 marks का. And when it was for 75 marks, जो हमारा section B होता था, we had 2 sections, section A and section B. So section A में you had to attempt all questions, but section B में you were given 3 questions and you had to only attempt 2 out of 3 questions. And वो बहुत lengthy questions होते थे, that is why you had to attempt 2 out of 3 questions. And 2022 तक ये 45 marks का था section A, and section B was of only 30 marks, like 15 marks each question, right? But now as you see कि उन्होंने marks भी बढ़ा दिए, now they are 80 marks. So now section A और section B का जो उन्होंने क्या कर दिया, now it is 40 marks each. अब क्या करना होता है, अब हमें सारे questions attempt करने होते हैं. So now you don't have a choice in any of the sections, or you cannot leave any questions. Hence you have to attempt all the questions. अब जो questions होते हैं section B में, they are not very lengthy. That is why time हमारा same है, बस marks like 5 marks बढ़ा दिए, right? Okay. And paper 4 में भी थोड़ी सी variance ये आई है after 2022 के paper 4 used to be of only 30 marks, but now, and it was 1 hour previously as well, but अब उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने अब वो 40 marks के कर दिया है and the time is same, so you have to speed up. Questions किस तरह के होते हैं, now what you mean by experimental skills, like you don't have to perform an experiment कि you will be going in a lab and you will perform an experiment, no, इस तरह नहीं होता. You will be given a paper और आपको इस तरह के questions दिए होंगे कि आपको अपनी experimental skills apply करते हुए वो questions के answers देंगे, right? Okay. So now the weightage is mentioned. Paper 1 की 30% है, paper 2 50% and paper 4 20%. So which means सबसे ज्यादा कम जो weightage है वो है ATP. Now this is also known as ATP, alternative to practical. And the highest weightage is of paper 2. But जो सबसे tricky paper आता है वो आता है MCQs का paper. Because now you see 40 marks, तो 40 questions होंगे आपके पास. So one question will consist of 1 mark. Again, no negative marking, but क्या होता है हमारे पास, now if you see 1 घंटे हमारे पास 60 minutes है and हमारे पास 40 questions है, so which means that you don't even get to
spend 2 minutes on a question. So around 1.5, 1.6 minute per question, जिसमें क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को असेस करना है, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे थ्योरी होगी, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बट कुछ क्वेश्चन इतने ट्रिकी होते हैं, एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प द एमसीक्यूज only and only if you practice past papers. Sorry. Okay. Now this is the formula sheet, right? Formula sheet as in, also remember that formula sheet would not be provided to you in the exam. ये मैथ्स का पेपर नहीं है कि आपको formula sheet given होंगी. You have to memorize all the formulas by heart, all the definitions, all the formulas by heart. इतने ज़्यादा कोई complicated formulas नहीं, बहुत simple easy formulas हैं, right? So ये आपको as you see ये डिवाइड हुआ, बेसिकली हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, सब्जेक्ट कंटेंट, इफ यू सी. सो नाउ यू सी, जो फर्स्ट यूनिट था हमारा मोशन, राइट? हमारे पास 6 मेजर यूनिट्स है, उसमें फर्दर टॉपिक्स डिवाइडेड है. तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, राइट? सो इसमें हमारे पास ये 6 to 8 हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, राइट? देन वी हैव मोशन. अच्छा, अब यहाँ से मेन फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं मोशन से, राइट? So अभी इनको देख के परेशान नहीं होना, we'll be going along and then we'll be discussing it. All right. Then this mass and weight, ये सब जो भी 1.4, 1.5 है, this is the part of your first unit. ये momentum, energy, work up, ये सब अभी first unit चल रहा है. This everywhere. यहाँ से हमारा थर्मल फिजिक्स स्टार्ट होता है, काइनेटिक प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स के बारे में बात होगी, पार्टिकल मॉडल, सॉलिड लिक्विड गैस एक्सेट्रा. देन टेम्परेचर की बात होगी and all that. So thermal physics is all about energy, temperature, molecules, etc. Then waves में हमारे पास हर तरह की waves होंगी, sound waves होंगी, and many other waves, right? ये waves होती क्या है, amplitude क्या होती है, right? Then we'll have light. अच्छा, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सबसे कह लो मुश्किल टॉपिक होता है एक तरह से, बिकॉज ये इतना लेंथी होता है और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, हर साल, राइट? सो नो नीड टू पैनिक. अभी ये सब बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इतना मुश्किल नहीं है. वील गो अलोंग एंड वील कवर एवरीथिंग वेरी सून. ऑलराइट. सो ये सब हमारे सिलेबस है. सो यहाँ से फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है यूनिट 5 न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम्स, रेडियो एक्टिविटी, देन वी हैव अर्थ एंड सोलर सिस्टम. अच्छा, अब ये अर्थ एंड सोलर सिस्टम आया है, सोलर सिस्टम 2022 तक नहीं होता था. दिस फॉर्मूला इज a न्यू फॉर्मूला इन फिजिक्स, राइट? स्टार्स एंड यूनिवर्स ये सब भी नहीं होता था. सो ये जो दो टॉपिक्स है ना, स्पेशली इसमें स्पेस फिजिक्स, क्योंकि स्पेस फिजिक्स कंप्लीटली नया यूनिट है. सो दैट इज वाई ये 6.1 और 6.2 इस पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू वोंट रियली इजीली गेट द पास पेपर्स. हाँ, आपको स्पेसिफिक पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, बट पास पेपर्स नहीं मिलेंगे बिकॉज ये नया टॉपिक है, राइट? अच्छा, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर किस तरह आता है, राइट? So moving forward, we'll be starting off with the very first topic, which is all right. अच्छा, अब तक does anybody of you has any question related to the syllabus, paper pattern, marks, etc.? Anyone? Seeing none, so I'll just continue. Okay. Actually, now talking about this topic, physical quantities, units, and measurements. So सबसे पहला जो हमारे पास word आता है, that is physical quantities.
It's a 2-minute break for Azan. और एक तो कभी यू आस्क्ड अ क्वेश्चन के जब दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, सो वेटेज क्यों इक्वल नहीं है? इट इज बिकॉज जो क्वेश्चंस आपको वो असेस कर रहे होते हैं ना इन एमसीक्यूज, दैट आर वे डिफरेंट एंड वे टेक्निकल देन द क्वेश्चंस वर बीइंग असेस्ड in an ATP, in an alternate to practical. Because when we are doing the questions, when we will be practicing, you yourself be amazed to see कि MCQs वाला paper is the hardest. Because क्या होता है MCQs में, they're also checking your time management. ATP में you don't have many questions, आपके पास 3-4 questions होंगे max and very easy. ATP सिर्फ आपकी experimental skills को check करता है. No theory, calculation भी होगी तो बहुत basic calculations होंगी. So ATP is only checking your experimental skills. When you were being taught an experiment, तो उस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा था कि अगर ये करेंगे तो ये होगा. सो एटीपी में आपकी वो वाले स्किल्स टेस्ट हो रहे होते हैं, राइट? जबकि एमसीक्यूज में आपकी सारी स्किल्स चेक होंगी, उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे, उसमें आपके पास थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, यू हैव कैलकुलेशंस, यू हैव एवरीथिंग इन वन पेपर. So, अगर पेपर 2 अगर देखा जाए विच इज थ्योरी, उसमें आपके पास मोस्टली क्या होता है, आपकी स्किल्स चेक हो रही होती है, राइट? राइटिंग स्किल्स. अब जो पेपर 1 होता है विच इज एन एमसीक्यू पेपर, उसमें आपके पास 40 क्वेश्चंस एंड टू आंसर इन 60 मिनट्स. सो वहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट चेक हो रही है, वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक हो रही है, वहाँ पे आपकी स्किल्स क्या आपको कितना याद है वो चेक हो रहा है. दैट इज व्हाई द वेरिएंस ऑफ वेटेज मैटर्स. एंड नाउ व्हाट अ वेटेज इज बेसिकली कि जब आपका ग्रेड बनता है ना, फॉर एग्जाम्पल, अब नाउ लेट मी गो बैक टू दिस या इफ वी गो बैक टू दिस कि नाउ इफ यू सी, ये जो पेपर है हमारा बेसिकली, लेट मी गो अहेड या दिस थिंग, यू सी 30% एंड यहाँ पे 20% एंड यहाँ 50%. ना वेटेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेपर बनाती हूँ 100 मार्क्स का, right? Percentage is 100. अगर if I have made a paper of 100 marks, for example 50 marks का मेरा एक पार्ट आएगा, एक क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, क्वेश्चन 1 मेरा 50 मार्क्स का है, क्वेश्चन 2 मेरा 30 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 मेरा 20 मार्क्स का है. So similarly, when an examiner designs or makes a syllabus, वो सिलेबस इस तरह बनाता है और वो जो आपको असेस करते हैं ना, व्हाट मीन बाय असेस, असेसमेंट ओवरव्यू ना, जो पेपर्स वो बनाता है वो इस तरह बनाता है कि जो भी आपका ग्रेड बनेगा ना बेसिकली ना, फॉर एग्जाम्पल ए स्टार वो 90% पे होता है रिगार्डलेस ऑफ द थ्रेशोल्ड. अभी थ्रेशोल्ड को हम कंसिडर नहीं करें, थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है जब सीआईज हो जाएंगे फिर डिपेंड करेगा कि थ्रेशोल्ड किस पे और ए स्टार किस पे बनेगा. बट जो टेंटेटिव जो हमारा ग्रेड स्केल होता है दैट इज ए स्टार 90% पे बनेगा, विच मीन्स 90 आउट ऑफ 100 आई गेट एन ए स्टार, राइट? सो ये जो पेपर्स हमारे बनते हैं, इसका मतलब है कि एक पेपर इतने मार्क्स का है. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट 18 आउट ऑफ 30, लेट्स सपोज इस पेपर में आपके 18 आउट ऑफ 40 है, एंड इसमें लेट्स से आपके लेट्स सपोज 30 ऑन 40 आ गए, राइट? तो उसमें क्या हो गया फिर, इस मार्क्स का जो द मार्क्स ऑब्टेन्ड, उस मार्क्स की परसेंटेज निकाली जाएगी, इन दैट परसेंटेज विल बी एडेड. फॉर एग्जांपल 18 अपॉन 40 जो भी परसेंटेज बनेगा, ये 30 अपॉन 40 जो भी परसेंटेज बना, राइट? यहाँ पे परसेंटेज में देखेंगे. सो 18 का हम लेंगे कितना परसेंट, 30%. वाई? बिकॉज मेरे जितने मार्क्स है दैट इज नॉट मैटर, जो पेपर के मार्क्स है वो कितने पूरे उसमें काउंट होंगे, दैट मैटर्स. मतलब एस, अच्छा अब ये जो पेपर है ना बेसिकली ये वाला, ये तो हमारा कब होता है पेपर, ये हमारा पेपर होता है एएस में होता है, सॉरी एएस कह रही हूँ, ओ लेवल्स में होता है ना हमारा पेपर. पेपर 1, 2 और 4 होता है हमारा, पेपर 3 नहीं होता, तो इसको अभी आप जस्ट इग्नोर दिस, राइट? पेपर 3 नहीं होता ओ लेवल्स में, राइट? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 होता है, उनकी परसेंटेज आपका ग्रेड बताती है, राइट? जो वेटेज होती है ना दैट इज बेसिकली कि किस तरह हमने क्वेश्चंस को या
लेट्स सपोज हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया हुआ, कंपोनेंट्स की होते ना क्या कहते हैं कि कितना परसेंट फ्रूटफुल है, तो इन शॉर्ट इन दोनों में अच्छा परफॉर्म कर लिया, गुड हो गया, बिकॉज एटीपी में मोस्टली पीपल परफॉर्म वेल, राइट? इज इट क्लियर नाउ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. Kabir, right? Is it clear now? You can just drop a message or unmute yourself. Alright, seeing no response. Example के साथ solve. कभी इसमें example दे, wait, let's just wait एक second, मैं example देती हूँ. हमारे पास P1 था, उसकी weightage क्या थी हमारे पास? 30%. मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स. P2 हमारे पास weightage क्या है? 50% है, मार्क्स है 80, राइट? एंड P4 था हमारे पास 20 मार्क्स का, सॉरी 20% weightage, 40 मार्क्स. So for example, let's say पेपर 130, अभी परसेंटेज को छोड़ दो, 40 मार्क्स है मेरा पेपर 1. लेट्स से आई गेट 30 आउट ऑफ 40 P1 में. P2 में मुझे मिल गए लेट्स से 50 मार्क्स है ना, मुझे मिल गए लेट्स से 75 आउट ऑफ 80 लेट्स सपोज. एंड P3 में आई गेट लेट्स से 18 आउट ऑफ नॉट 18, 35 आउट ऑफ 40. लाइक अब मैं बनाऊंगी, अब परसेंटेज और आपका ग्रेड बेसिकली कैसे बनेगा इस पेपर में से कि फॉर एग्जांपल मुझे 30 आउट ऑफ 40 है ना, मेरी परसेंटेज क्या है, मैं 30 को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगी. सो 30 का 30% क्या है, दैट इज व्हाट आई मीन. 30 का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, उसकी परसेंटेज आएगी, मतलब बिकॉज जितने भी मार्क्स हैं वेटेज तो आपकी उतनी ही जाएगी जो वेटेज बता दी है एग्जामिनर ने कि इस क्वेश्चन की जो वेटेज है ना, दिस पेपर होल्ड्स दिस मच इम्पोर्टेंस. बेसिकली वेटेज का मतलब है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस पेपर, राइट? तो अगर मैं निकालू 30 का 30%, इट वुड बी 9, राइट? 30 मार्क्स का 30% इज 9. अब 75 आउट ऑफ 80 आए मेरे पास, और ये कितना मुझे परसेंटेज चाहिए? 50% चाहिए. सो लेट्स से 50% of 75, यहाँ पे मेरे पास आ गया 37.5. सो ये बेसिकली मार्क्स मेरे पास क्या है? 37.5 आउट ऑफ 50 है. वाई 50? बिकॉज ये मेरी परसेंटेज है, यहाँ पे ये जो है ना, ये मेरी परसेंटेज, मतलब 50% में से आई हैव रिसीव 37.5%, राइट? एंड सिमिलरली हम इस तरह करेंगे, 40 में से अगर 35 आए, सो इट इज 87.5%. सॉरी, ये मेरी बन जाएगी 35 multiplied by 0.27. So now what you do is, अब इन सारों को हम ऐड करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, एंड वहां से हमारा ग्रेड बनेगा. सो फॉर नाउ डू नॉट गेट इनटू दिस, इससे प्लीज परेशान नहीं हो, राइट? दिस इज नॉट योर थिंग टू बी वरीड अबाउट. आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है. ग्रेड स्केल को दिमाग में रखना है, यस, कि मेरे इस वेटेज है, मुझे किस पेपर में कितनी ज्यादा मेहनत करनी है, दैट यू डिसाइड. this is just a grade scale, this is just, you know, a breakdown of the papers of the components कि कौन सा पेपर कितनी वैल्यू होल्ड करता है, right? Can I start with the topic now? All right. Okay.
So हमारा first topic is physical quantities, units and measurements. Remember ये जो first unit है हमारा forces motion वाला, ये उसका सबसे पहला topic है and also the first topic in your book. So now talking about a physical quantity. अब physical quantity होता क्या है? So physical quantity को describe करने के दो parts हैं. एक उसका magnitude. Now you can also call magnitude as the size. So एक उसका size या magnitude, which is the same thing, and second thing is the unit. Now unit का मतलब कि for example temperature का unit क्या होता है? Degree Celsius या degree Fahrenheit, right? अच्छा, अब दो तरह के यूनिट्स होते हैं. एक होता है यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट. एसआई यूनिट विल बी स्टडीइंग फर्दर, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू यूनिट. क्या होता है एक चीज का. अब फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हमारे पास, साइज और मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 24 न्यूटन. अब ये जो 24 है ना, ये उसका साइज है एंड n which is Newton is the unit. और ये किस चीज का है? न्यूटन फोर्स का, राइट. सो 24 जो ये बेसिकली क्या कहती है, ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स की, राइट. अगर मैं बोलती हूँ कि आई विल लेट्स सपोज 48 kgs, सो वो फिजिकल क्वांटिटी है. मतलब मेरा जो वेट है 48 kg, उसमें जो ये है वो मेरा साइज है एंड दिस इज द यूनिट. एज सिंपल एज दैट. अगर बाहर इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, सो वो टेम्परेचर है. टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी है करंट, राइट. 37 वहां से हमारे पास साइज और मैग्नीट्यूड है एंड डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, राइट. इज दिस क्लियर? अच्छा, तो आई जस्ट राइट इट डाउन दैट every physical quantity consists of two things, magnitude and unit. ये हमने चीजें डिस्कस कर, राइट. ऑलराइट, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are scalars and vectors. So we have two types. अच्छा, अब स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस ये होता है कि स्केलर्स, scalar quantities are those quantities which have no direction. Now for example, now what do you mean by no direction? And the opposite for vectors is the quantity which has a provided direction. Now what do you mean by direction is यहाँ पे. Now for example if I talk about temperature या time, right. तो मैंने बोला कि टाइम अभी यहाँ पे लेट्स से 5:46 हो रहे हैं. सो कोई डायरेक्शन है क्या, किस डायरेक्शन में 5:46 हो रहे हैं? लाइक नॉर्थ हो रहे हैं, साउथ हो रहे हैं, साउथ ईस्ट हो रहे हैं, राइट. देयर इज नो डायरेक्शन. सिमिलरली टेम्परेचर 37 डिग्रीज हो रहा है, नो डायरेक्शन के नॉर्थ 37 डिग्री, राइट. सो ये वो चीजें जिनकी डायरेक्शन नहीं होती. एंड the things, the quantities which do not have a direction are called as scalar quantities. And opposite for vector quantities, now let's suppose I say velocity, right. अच्छा, अब speed. अच्छा, now speed is not a vector scalar quantity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, right. Because velocity में you are
being given the direction. And similarly जो force लगती है हमारी, force हमेशा direction में लगती है, it is always in direction, right? So for example ये मेरे पास एक let's say boat है मेरे पास, right? Now you are rowing the boat. अब boat पे आपको एक pressure लगाना पड़ेगा, एक force लगानी पड़ेगी. अब वो force आपको direction से लगानी पड़ेगी. For example, if I put direction towards north, तो मेरी boat let's suppose आगे जाएगी. And similarly अगर मैंने उल्टी force लगाई, so my boat will go backwards, right? So again यहाँ force की भी direction है, right? So what we understand is scalars have magnitude. अच्छा, now अब दोनों में magnitude और size तो होता है, right? Because you cannot measure a physical quantity without its quantity. So magnitude but no direction. So examples could be, let's say, temperature, time, distance, length, speed, and time. Also mass. So now how much you are weighing? For example, let's say 48 kg, the previous example. I weigh 48 kgs. Now there is no direction कि मैं 48 degrees east पे weigh करती हूँ, west पे weigh करती हूँ, right? So again, there is no direction of mass. अच्छा, now these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 things you have to memorize by heart. And vectors के भी कुछ examples हैं जो आपको you have to memorize by heart. You have to know कि अच्छा ये तो पक्के पक्के vectors हैं and these are scalars. So you need to know how to differentiate between a vector and a scalar. So have magnitudes and direction as well. So example could be velocity, acceleration. अच्छा अभी ये बहुत बड़े बड़े words से do not hesitate. We'll अच्छा क्योंकि ये जो velocity है, acceleration है, displacement है, force है, these please unmute yourself and let me know because I cannot continuously switch my tabs and see if now it's visible. All right. So from now on, if any one of you has any question, just please unmute yourself and ask because I might skip chats at times, right? Okay. ठीक है. So is this clear कि scalar की जो addition होगी वो addition इस तरह होगी कि एक ही अगर physical quantity की addition पूछ रहे हैं, like same physical quantity can be added. Though different physical quantities in scalars cannot be added, right? For example, अगर mass और time है, आप mass और time नहीं add कर सकते. Like humanly, if you think that if I need to add my weight and my length, you cannot, right? अगर मेरी height इतनी है और मेरा weight इतना है तो मेरा resultant क्या है? No, you cannot do that, right? So as simple as that, total mass पे मेरा क्या हो जाएगा? 5 kg of apples and 7 kg of resultant हो गया. This is known as your resultant, right? Is it clear? Please unmute and let me know yes or no. Guys, please unmute. All right, never mind, no response. So I'll just assume that it's clear. All right, so ये बात हो गई scalars को किस तरह add करते हैं. Now talking about that how we are supposed to add vector quantities. Since vector quantities have a direction, अब जो हमारे पास scalar quantities थे हमारे पास कोई direction नहीं था. That is why हम simply arithmetic progression से उसको add कर देते हैं and we get the resultant answer. But vector quantities में you cannot do it the same way. You cannot simply apply math and plus minus करके answer आ गया. No, you have to construct the diagrams in order to add the vectors.
Now, how you're supposed to do is that जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है ना उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? आफ्टर एडिशन द आंसर इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर. अच्छा, अब यहाँ पे वी हैव certain steps that we need to follow to do vector addition. Let me think of an example. अच्छा, अब ये तो हो गया वो केस की बात ना. दिस थिंग व्हाट आई टोल्ड कि जो हमारा वेक्टर्स है वो सिंपली ऐड नहीं हो सकते ना. दिस केस इज बेसिकली केस नंबर 3. इसमें ये उस केस में होता है कि व्हेन योर वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, राइट? ये भी बहुत हॉपस्कॉच लग रहा होगा. सो वेट, आई जस्ट गो ऑन फ्रॉम केस 1. तो 3 केसेस होते हैं हमारे पास वेक्टर एडिशन के भी. बहुत सिंपल सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है. जस्ट केस 3 इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. सो केस 1 में होते हैं हमारे पास if two vectors are in the same direction. सो फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास, अच्छा अब हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि वेक्टर हमारा हमेशा ऐसे बनता है, राइट? एक टेल होती है, एक हेड होता है. सो दिस इज योर टेल, दिस इज योर हेड, राइट? ये हेड होता है, ये टेल होता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वेक्टर्स यहाँ पे, राइट? टू वेक्टर्स है केस वन में. एक वेक्टर मेरा जा रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अच्छा, अब मीटर पर सेकेंड को आई कैन ऑल्सो राइट ms⁻⁻1. So this is also known as meter per second, and m/s is also pronounced as meter per second, right? अब ये मेरे पास वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 मेरे पास सेम डायरेक्शन में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. स्पीड कह रही वेलोसिटी से, बिकॉज स्पीड हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. और वेलोसिटी हमारी क्या है? वी डिस्कस दिस अगेन. अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है. अगेन बिकॉज वी हैव फर्दर whole entire topics on each of these following uh, quantities. Like अब दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, सेम स्पीड पे जा रहे हैं. सॉरी, नॉट सेम स्पीड पे, सेम वेलोसिटी पे, डिफरेंट वेलोसिटी बट इन द सेम डायरेक्शन. तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो सिंपली ऐड कर देंगे, राइट? बट पॉइंट बीइंग कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, अब दोनों का सेम यूनिट है, राइट? सो इट मींस वेलोसिटी है. So what we'll do is 2 plus 6, we get 8 meter per second, right? Simply. ये कौन सा केस है? Vectors in the same direction. Now what if we have two vectors which are in the opposite direction, right? So for example, I have one vector which is going this way, 20 meter per second, and the other vector I have is going the other way at 27 meter per second, right? अच्छा, इसको काम करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये, राइट? अब फॉर एग्जांपल, अब क्या करें कि अब मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज you subtract the vectors. Simple. Same direction addition, different direction opposite direction subtraction. अच्छा, अब बात आती है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करने. सो ऑलवेज रिमेम्बर, अच्छा नाउ इट्स अप टू यू कि आप 20 माइनस 27 करो और यू डू 27 माइनस 20. बट रिमेम्बर कि जो भी आंसर, फॉर एग्जांपल इफ यू डू 20 माइनस 27, ऑलवेज राइट इट पॉजिटिव. हम हमेशा लिखेंगे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो सिंपल तरीका क्या है? सो यू डू नॉट गेट इनटू अ हसल. द इजीएस्ट वे इज के subtract the smaller from the bigger.
राइट. सो बड़े में से छोटा निकाल दो. सो we'll do 27 minus 20, we get 7 meter per second square. Right. Now case 3. अच्छा, ये हम इसको छोड़ देते हैं. Let me just इसको हटा के. This was talking about velocity. अच्छा, velocity का जो यूनिट होता है ना वो मीटर पर सेकंड होता है, राइट. एंड ये जो यूनिट है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन, राइट. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड्स ना. अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं वेक्टर्स का, राइट. ओके. केस नंबर 3. अच्छा, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एज वी सेड कि जो भी रिजल्ट निकलता है हम उसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर. तो अगर वेलोसिटी का रिजल्ट है तो वी विल से रिजल्टेंट वेलोसिटी. एंड यहाँ पे वील से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. ऑलराइट. अच्छा, नाउ दे आर सेइंग व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉन पैरेलल. अच्छा, अब नॉन पैरेलल, ना यू नो के पैरेलल वो वाली लाइंस होती हैं व्हिच नेवर मीट, राइट. एंड नॉन पैरेलल लाइंस डू नॉट ऑलवेज मीन परपेंडिकुलर लाइंस, because perpendicular lines are the lines which make a 90-degree angle when they meet, right. So for example, अगर ये दो lines हैं, so these are non parallel. But for example, if I have, let's say, these two lines, तो ये मेरे पास क्या है? perpendicular line, because when they are meeting they are making 90-degree angle. So ये perpendicular है. ये वाली जो lines हैं, the ones I circled, these are non parallel, these are not perpendicular, right. अच्छा, now things got easier for you guys is that अब जो वेक्टर्स आते हैं बनाने के लिए, they're only perpendicular. When you will be doing past papers, you will see that a lot of vectors and the question they are asked you to make are non-perpendicular, as in non-parallel and non-perpendicular as well, right. मतलब इस तरह की कुछ लाइंस होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये एक वेक्टर जा रहे हैं तो एक वेक्टर यहाँ से भी जा सकता है और सिमिलरली वेक्टर यहाँ से भी जा सकता है, राइट. यहाँ से भी जा सकता है, राइट. But now in your syllabus they have removed this and you are only supposed to make perpendicular vectors, right. 2022 तक ऐसे कुछ नहीं था. 2022 तक students had to do हर तरह के vectors, non parallel, perpendicular, non perpendicular, right. But from 2023 onwards it is just perpendicular vectors. All right. So now you have when two vectors are non parallel. Now what do you mean by non parallel? For example, I have one vector which is going this way, and the other vector which is going this way. So 15 न्यूटन अपवर्ड्स जा रहा है और ये 20 न्यूटन्स राइटवर्ड्स जा रहे हैं, मतलब फोर्स है ये, राइट. अब स्टेप 1 क्या होता है? ना यू सी कि ये नॉन पैरेलल है, राइट. एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर because when I join these, right, when I join these two lines, if you'll see, like for example, अगर मैं इसको extend कर दूं, you'll see this will meet at some point and जो एंगल बनेगा मेरा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, right. The step 1 is always to choose a scale. अच्छा, then step 2, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, right. I'll just write the steps and I'll explain you. अच्छा, also remember कि हमेशा दो ही वेक्टर्स दिए होंगे and then you will have to wait, I'll explain you ये दो वेक्टर्स का करना क्या होगा. Draw both vectors head to tail rule. This is the key. If you miss this,
entire 6 marks question gone wrong. हेड टू टेल रूल हमेशा याद रखते हैं. ओके, सो सबसे पहला स्टेप इज चूजिंग अ स्केल. नाउ सिंस हमें क्या करना है स्टेप 3 में, व्हेन वी हैव नॉन पैरेलल वेक्टर्स के दोनों एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और एक तो नॉन पैरेलल में, बिकॉज जब हम वेक्टर को यहाँ देख रहे थे यहाँ पे इफ आई मेक दिस तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं. ये जो वेक्टर्स है हमने जितने भी देखे वो सारे पैरेलल थे, राइट. वेक्टर क्वांटिटीज की जो हमने दो एग्जांपल्स पिछले किए हैं, द टू केसेस बिफोर दोस आर पैरेलल वेक्टर्स, राइट. सो और ये कौन से, ये नॉन पैरेलल वेक्टर्स है. अब नॉन पैरेलल वेक्टर्स में यू हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स. Now, if you see 20 Newton and 50 Newton, now you have to choose a scale. Now, what you mean by step one, choose a scale. अब choose a scale क्या होता है basically? You select a scale in order to draw your vectors. Now, what do you mean by selecting a scale? is कि now you see एक जो मेरे पास वेक्टर है वो 20 न्यूटन है और एक 15 न्यूटन है. अब आपको स्केल लेना है, एक रूलर लेना है, एंड देन यू हैव टू थिंक कि मैं कितने सेंटीमीटर को एक न्यूटन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ दैट इट कैन इजीली फिट इनटू माय शीट. सो नाउ यू कैन ईदर से कि मैं 1 सेंटीमीटर इज टू न्यूटन कर देती हूँ. okay, 1 सेंटीमीटर ऑन अ स्केल वुड बी रिप्रेजेंटिंग 2 न्यूटन, राइट. और यू कैन ऑल्सो से अच्छा अब स्केल चूज करना सबसे सेंसिबल काम. नाउ यू हैव टू चूज अ स्केल वेरी सेंसिबली. अब ना इतना बड़ा यूज कर दे चूज करना कि वो बिल्कुल इट्स गेटिंग आउट ऑफ द शीट, एंड ना ही इतना छोटा, ना ही इतना इट शुड नॉट बी लाइक वेरी मिनिएचर कि इट इज नॉट विजिबल इनफ फॉर द एग्जामिनर, राइट. सो इतना साइज होना चाहिए आपका जो when you make the diagram, when you construct the diagram, that it is visible, it is clear, and always use a pencil to construct the diagram. Right. So for example, मैंने यहाँ पे let's say, अच्छा now you can also use 1 centimeter is to 2 newtons. So when I choose 1 centimeter is to 2 newtons, तो 20 newtons की जो मेरी लाइन बनेगी वो कितनी की बनेगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट. इस 20 न्यूटन. यहाँ पे किसी को मस्त है. How you convert the units like centimeter to millimeter or meter? I guess we multiply by 1,000. How you convert the units? Okay, so देखो डिपेंड करता है कि कौन से यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है. सो नाउ centimeter to millimeter you do not multiply by 1,000. Why? Because in 1 centimeter you have 10 millimeters, right? ये आपको मेमोराइज करनी होती है चीजें कि 1 kg में 1,000 ग्राम्स है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स है. अगर 2 सेंटीमीटर उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 2 सेंटीमीटर्स, यू राइट सिंपली 20 मीटर, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे.
राइट। अगर उन्होंने पूछा है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, देन यू विल डिवाइड इट बाय 10, राइट। बैलेंस का रिजल्टेंट जीरो होता है। यूनिट कन्वर्जन समझा दो। देखो कबीर, अभी यूनिट कन्वर्जन आई नहीं है। व्हेन वी गो, एंड यूनिट कन्वर्जन इज नॉट इज नॉट हार्ड। सिंपल क्या होता है देखो, ये मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं बता रही हूँ। ये जो 10 सेंटीमीटर इज 20 न्यूटन, दिस इज चूजिंग स्केल, राइट। मैंने रूलर उठाया, लेट मी, ये मेरा रूलर, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली कि मुझे जो ये है, मुझे अब बेसिकली एक लाइन बनानी है 20 न्यूटन की। अब मैं 20 न्यूटन की लाइन बना नहीं सकती, बिकॉज जो मेरे रूलर पे जो चीज होती है वो सेंटीमीटर गिवन होता है, राइट। अब मेरे रूलर पे जो मेजरमेंट है दैट इज अ सेंटीमीटर। तो अब क्या करते, यू अस्यूम, जैसे मैथ्स में भी अस्यूम थिंग्स, यहाँ पे भी ऑल्सो हैव टू अस्यूम। व्हाट यू डू इज यू अस्यूम के आई विल रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस है ना, या कि 1 सेंटीमीटर ऑन माई स्केल विल बी रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर on scale or ruler will be representing 1 सेंटीमीटर scale will be representing 2 Newton। मतलब अगर जब मैं लाइन बनाऊं तो what you mean to say is कि जो अब मेरा जो रूलर है ना वो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया आपने, राइट, सिंपल। सो 1 सेंटीमीटर की जगह आपने यूनिट्स में कन्वर्ट, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ये बस मैंने अभी जो सेलेक्ट किया दैट इज जस्ट स्केल। मैंने सिर्फ अपना स्केल चूज किया टू ड्रॉ द लाइंस, राइट। लेट मी सी इफ you still have any confusion. Balanced है तो मूव ही नहीं। So we are not talking about moving, and कहाँ से balanced है? This is not balanced. देखो, अब हमने अपना स्केल डिसाइड कर लिया, 1 सेंटीमीटर टू 2 न्यूटन, और वी कैन ऑल्सो, बिकॉज अब 1 सेंटीमीटर टू 2 न्यूटन, तो मतलब 20 न्यूटन की लाइन कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली 50 न्यूटन की लाइन बनेगी मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब नाउ मुझे डायरेक्शन भी देखना है। 20 न्यूटन राइट वर्ड्स है, सो मतलब मेरी यहाँ पे इधर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ऑफ 10 सेंटीमीटर।